Assalamualaikum, Amna. Why are you late? Yes, Amna. Walaikum salam. Sorry, what, Amna? सर मोबाइल चार्जिंग पर था। क्या था? समझ में नहीं आया। मैं क्या कह रहे हैं आप? मोबाइल चार्जिंग पर अच्छा, था तो मोबाइल टाइम चार्जिंग नहीं पे था। देखा। अच्छा। तो आप लोगों ने अलार्म वगैरह नहीं लगा के रखा है क्या? नहीं, आई थिंक सर आपके 2 क्लास होनी है तो। सर पता नहीं बाकी बच्चे कहाँ हैं, बट प्लीज राइट हियरिंग गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन फिजिक्स। जब आप लोग वर्क डन ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज जब आप ये पढ़ते हैं तब आपने ये फॉर्मूला देखा होगा दैट वर्क डन इट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। यू मस्ट हैव सीन दिस राइट। और आई थिंक यहाँ पे शायद पहले भी पढ़ा होगा इन व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड। W is equal to Q into V. And for our electrochemical cells, we can say that the voltage. Yes, Mariam. Sufyan, am I audible? Yes. Okay. So we can write this as Q into E cell. Whatever the EMF of the cell is. Now, if I talk about what charge on one electron, then charge on one electron it is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And if I talk about the charge on 1 mole of electron, then this will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 9 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23. So when you multiply both of these numbers, you get an approximate value of 96500, and this will be also in coulombs. So this 96500, this is known as 1 Faraday or 1F. This is written 1F. So please see here, guys. So for 1 mole of electron, I have 1 Faraday. For 2 moles, 2 Faraday. For 3 moles, 3 Faraday. So I can say that for n moles of electron, the charge will be equal to n into Faraday. Charge will be equal to n into Faraday. Now we had W it is equal to Q into V. The Q it is equal to NF and the V that is equal to E cell. ठीक है ना? Voltage it is equal to E cell. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा. No need to write now. You have to answer me. Let us suppose initially I had 10 joule of energy inside my body. Then I did some work, and finally, right now my body has, I'm left with 4 joules of energy. So what is the work done? Initially I had 10 joules, फिर हमने कुछ काम किया. Now I have in me 4 joule of energy that is remaining. So how much joule of work I have done? Tell me, Sufyan, Amna, so you can hear me. 6 joules. 6 joules of work. Yeah, ठीक है.
If I talk about my energy, then what has happened to my energy? Delta, if I talk about the delta G for me, don't write this on a PC. Final minus initial. So this will be equal to how much? 4 minus 10, that is equal to minus 6 joules. So I can see that there is a relationship that whatever the delta G is equal to minus of W. Does that make sense? Yes or no? Can you see the relationship? Yes Yes, or no? sir. Please tell me. है ना? But simply by logic, we have this relationship that the change in the energy of a system will be equal to the negative of the work done. Negative of the work done. And what is the work done? We have just now seen that it is equal to minus is from here, N into Faraday into E cell. This will be the delta G. And what will be the delta G naught? Delta G naught will be equal to minus NF E naught of cell. So here we can write one point. Galvanic cell will work. Galvanic cell will work only if E cell is positive. Only if E cell is positive. Because when E cell is positive, delta G will be negative and reaction will be spontaneous. Another point that you can write is the maximum work done will be by a cell will be delta G naught the magnitude, or that is equal to the magnitude of minus NF E naught cell. ठीक है, इसका magnitude cell. You can write this down. इसमें I'm showing a part where what you don't have to write. This part you don't have to write, है ना? ये बस समझाने के लिए था. You don't have to write this part. Please copy this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna, Mariam, and Sufyan. Amna got disconnected. Just waiting for Sufyan now. Okay. Write a question.
क्या जो कर वी आर डन विद इलेक्ट्रोकेमिकल सी एंड एवरीथिंग ना, ठीक है ठीक है, तो कंफ्यूज हो रहे थे। लेट अस डू आवर क्वेश्चन। सिंपल, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड वाला सवाल है। इग्नोर दिस पार्ट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है। हाउ मच मैक्सिमम वर्क वुड बी डन ऑब्टेन्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ दिस सेल। सिंपल क्या है फॉर्मूला आपके पास? सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे चलिए ठीक है, आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वन ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी एनोड, है ना। सेल, अच्छा ये तो दिया हुआ है आपको, निकल से निकल टू एजी से एजी दिया हुआ है आपको। यू हैव टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू। तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, है ना। ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ट्राई दिस। आफ्टर दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फैराडे का वैल्यू आप दीजिएगा 96500 मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट जो आपका निकलेगा, एंड दिस वैल्यू विल बी, ये ध्यान रखिएगा जरा, जूल्स पर मोल में ये वैल्यू आती है, जूल्स पर मोल। कैलकुलेट द ई नॉट वैल्यू। आई थिंक होपफुली आप लोग ई नॉट कैलकुलेट करना तो याद होगा आप लोग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट द ई नॉट वैल्यू एंड सेंड ऑन माय जूम चैट। हाँ गाइस बताइए, व्हाट इज द ई नॉट? ई नॉट नहीं निकालने आ रहा है यार, इतना टाइम। हाँ, मरियम बतूल, आमना, सफियान, सलाम अलैकुम। ताहा, है मैं ऑडिबल? ताहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो ताहा। ताहा इज नॉट रिप्लाइंग। यस मरियम बतूल, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? मरियम बतूल off. आमना, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? आमना, यस आमना, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? नो, दैट इज नॉट द ई नॉट यार, ई नॉट नहीं कैलकुलेट करने आ रहा, क्या कर रहे हैं आप लोग? सफियान, सफियान, यू हैव नॉट मैसेज मी, सेंड द ई नॉट ऑन माय जूम चैट। ताहा भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे भाई, बताओ। देखिए आप, देखिए आप। हाँ वेरी गुड सफियान, दैट इज करेक्ट। Yes, sir. यस, आपको इतनी देर से आवाज दे रहे हैं हम। ताहा, कैन प्लीज कीप योर माइक ऑन? Sir, I just so joined. नो नो, बट आई वाज कॉलिंग यू। आप जब ज्वाइन किए उसकी काफी देर तक कॉल पर हटाइए।
आप संडे वाली क्लास में नहीं आए थे डीएनएस ब्लॉक वाले में? No, sir. I was out, sir. I was not available. आप लाइक व्हाट डिड यू हैव, लाइक क्या था, क्या करना था आपको बाहर में? Oh, sir. I had this religious gathering. So like you would not be able to attend the Sunday's classes, that means. No, no, sir. No, that was just for 3 days. I came back home now. So you were in summer camp or something like that. Okay, fine. तो रिकॉर्डिंग प्लीज मान लीजिएगा, ठीक है? था टीम से रिकॉर्डिंग मान लीजिएगा, ओके? Okay, sir. चलिए, ठीक है। फर्स्ट Yes, ऑफ sir. ऑल व्हाट इज ई नॉट? अच्छा, आज क्यों लेट थे आप? व्हाई वर यू लेट टुडे? I just came home now. क्या आप वहां से अभी आ रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, तो माइनस माइनस 0.25, 0.80 माइनस प्लस हो जाएगा 0.25, तो फिर इक्वल टू 1.05 वोल्ट इज द ई नॉट सेल। And how much electrons, Sufyan? Any idea? How many electrons are used? Two. Yeah, very good. Minus 2 into 96500 into 1.05. Okay, once you calculate this value comes out to be 202, negative obviously, 202650. This will be in joules per mole. अगर एमसीक्यू वगैरह में होगा ना, then you may also see kilojoule in the answer, so you can write 0.202.65 kilojoule per mole. Please copy this down. Raise your hand once you're done. उसके बाद एक और सवाल करेंगे, then we will move on. ये तो वेरी कॉमन, मतलब जनरल सवाल है, बहुत सारे सवाल आपको इस टाइप के मिल जाएंगे इन द पीवाईक्यूज एज वेल एज इन एनसीईआरटी आल्सो, दिस टाइप ऑफ। अगला जो सवाल है दैट इज नॉट वेरी कॉमन, तो एक बार कर लेते हैं, अगर ऐसा सवाल आया तो फिर उसको हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, है ना? यू मे आल्सो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से समटाइम। वेटिंग फॉर मरियम बतूल। हमारी मतलब क्या हो गया आपके इंटरनेट को? इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप मरियम? हाँ सर, नेट थोड़ा खराब है और अभी पावर ऑफ हो गया था लैपटॉप। और आप ठीक हैं? नहीं सर, बुखार है। बुखार है तो फिर क्लास क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात की बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो सिर्फ जी देखिए या फिर चलिए ठीक है। जी, मैं अभी लिख तो नहीं पाऊंगी, मैं फोटो ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए फोटो ले लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग से भी, है ना? जी हल्का सा बस समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वो भी कुछ बात नहीं, ठीक है? मतलब जरूरी नहीं है ऐसे क्लास करना, मतलब फीवर वगैरह में परेशान हो कितना फायदा क्लास करने का, ठीक है? इफ यू जी, वांट मैं टू सुन लीव, रही ठीक है, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव एट एनी टाइम, ओके मरियम? हूँ। ओके सर, थैंक यू। देखिए ये सवाल है जैसे, estimate the minimum potential difference needed to reduce Al to O3 at 500 degrees Celsius that gives the energy change for the decomposition reaction is 960 किलो। अब यहाँ पे जो आपके पास पूछा हुआ है ना, that estimate the minimum potential difference, it is actually asking about the voltage। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं that they are delta G, it is equal to minus of NF E cell, minus of NF E cell, ठीक है? So by the way, this is not in the standard condition. That is why we have written E cell. But जब भी maximum work done की बात होगी, we are always going to take what? अच्छा, एक एक भाई लास्ट क्लास, सॉरी सॉरी, just give me a second. इसमें एक और चीज आपको ऐड करना पड़ेगा। This is the delta G, but the maximum work will be equal to the magnitude of delta G naught, है ना? तो यहाँ पे बस आपको प्लस कर देना होगा, 202.65 किलो जूल पर मोल will be the answer.
बिकॉज इट इज मैक्सिमम वर्क डन। वर्क जो होगा वो नेगेटिव हो नहीं सकता है, मतलब इन रियलिटी कुछ भी नेगेटिव साइन के अंदर पॉसिबल है नहीं, है ना। दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट टेक द डिग्री सेल्सियस स्केल और टेम्परेचर, रादर वी टेक द केल्विन स्केल, बिकॉज केल्विन नेगेटिव नहीं आता। तो एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन मेजर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऑल दो नेगेटिव इज गोइंग टू टेल यू समथिंग, है ना। जब फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव जो एनर्जी की हम बात करते हैं, दैट मीन हीट इज बीइंग रिलीज, तो वो डायरेक्शन की बात कर रहा होता है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है, फाइन। एंड समथिंग इज पॉजिटिव, देन पॉजिटिव में क्या होता है, वो भी बता रहा होता है कि यहाँ से यहाँ जा रही है, फाइन। तो नेगेटिव जनरली चीजें नहीं होती है, जब भी नेगेटिव होगी तो कुछ ना कुछ मतलब होगा, फाइन। वर्क डन जो था आपके पास वो क्या हो गया, पॉजिटिव में ही रहेगा, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। Now, in this question, what they have done is that they have given you the delta G, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अंदाजा लग जाएगा इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो रिएक्शन हो ये उससे। पेरिडेज कांस्टेंट तो है ही, और आपको क्या दिया है, ई सेल दिखाना है, ई सेल कितना होगा। यू कैन राइट दैट ई सेल विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी अपॉन एन एफ। तो डेल्टा जी कितना है आपके पास, 96500। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें दिक्कत जो आती है, उसके लिए क्या करना है, देखिए आप एल्यूमिनियम को ले लो, ठीक है, या तो फिर आप ऑक्सीजन को ले लो, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप एल्यूमिनियम को लीजिएगा तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आपके पास देयर आर टू एल्यूमिनियम एटम्स। पहले देखिए बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, इज इट बैलेंस है, यूजन ऑफ व्हीकल में बैलेंस है। इज द रिएक्शन बैलेंस, बोलो भाई, इज द रिएक्शन बैलेंस, नो और यस, पता ही नहीं चल रहा किसी को क्या कितना। व्हाट हैपेंड, आमना मरियम सुफियान ताहा, इज द रिएक्शन बैलेंस, यस और नो। नो आइडिया, कुछ नहीं बोलेगा, नाम लेना पड़ेगा, सुफियान ताहा, इज द रिएक्शन बैलेंस। Well, I think so. व्हाट सुफियान, I think so. हाँ ठीक है, तो बैलेंस है। और दूसरी देखिए, एक तो गलती ना बच्चे क्या कहें यहाँ पे, एक तो पिटफॉल ये है दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग, है ना, सवाल पूछना क्या चाहता है। दूसरी चीज जो गलती करते हैं बच्चे, इज थिंक दैट 2/3 Al2O3 gives 4/3 ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लस O2। सर 3 से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी 2Al2O3 gives you 4Al प्लस CO2, ठीक है। इस रिएक्शन को लेकर सर हम लोग ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। I'm just telling you how the people, how मतलब students they can do some mistakes. So if you calculate the number of change in oxidation state निकालेंगे पहले, तो ये तो जीरो हो गया यहाँ पे, and aluminium here it is going to be in +3 oxidation state, है ना। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, फिर हम कर ही देखिए आप लोग के 2x + 3 × -2 it is equal to 0। 2x because there are two aluminium, 3 because there is 3 oxygen atom, -2 for the oxidation state of oxygen atom. So 2x will be equal to +6 and x will be equal to +3. So the change in oxidation state is equal to how much, delta OH की अगर हम बात करें, delta OH it is equal to 3. And what is the number of moles, उसी से number of electron निकलते हैं, moles into delta OH। तो moles यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कितने, 2, और delta OH कितना है, 3। यहाँ से आपके पास आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। बट यही चीज देखिए, अगर हमने पहली वाली रिएक्शन दी, जो रिएक्शन दी हुई है उसमें अगर आपने निकाला तो मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू डेल्टा ओएस, ठीक है। तो मोल्स कितने हैं आपके पास, 2/3 इनटू डेल्टा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपके पास, बताइए। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज इक्वल टू हाउ मच, 2/3 नहीं, एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम आपके पास है 4/3, नॉट 2/3 ना, 4/3 एल्यूमिनियम है। अगर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, 4/3 ऑफ एल्यूमिनियम, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज इक्वल टू हाउ मच, 3। अब 3 से 3 कैंसिल करते हैं, आपको कितना मिल जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। अब यहाँ इस रिएक्शन से 4 आ रहा है, इस रिएक्शन से 6 आ रहा है, तो क्या कौन सा लेना है जो आपको रिएक्शन दी हुई है, बिकॉज चांसेस सुनिए का, इफ यू रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स, देन ईच एंड एवरी रिएक्शन इज अकम्पनीड विद सम डेल्टा एच। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है ना आपको 960 किलो जूल,
इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है, इस रिएक्शन का डेल्टा जानते हैं क्या होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा 3 × 960 किलो जूल। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इस तरह के एक्सरसाइज करते थे दैट व्हेन वी हैड टू कैलकुलेट द फॉर्मेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब होता था, देन वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई समथिंग इन द रिएक्शन। पूरे रिएक्शन अगर मल्टीप्लाई करते थे तो डेल्टा एच के वैल्यू में भी मल्टीप्लाई हो जाता, राइट। इस रिएक्शन को बिल्कुल नहीं लेना, अगर आप इस रिएक्शन को लेंगे तो फिर इसको भी डेल्टा एच लेना पड़ेगा, ठीक है। खैर, बहुत बातें बता दी भाई हमने। यहाँ पे आपको हमने 9650 क्यों नहीं दिया, माइनस ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी कितना है 960, 123 जूल विल बी देयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच, 4 × Faraday 96500, ठीक है। ये आपके पास है। तो इफ यू सी इट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब 96500 और 96, यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 डिजिट है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 0.5 चला जाएगा। सर, 2.5। 2.5, हाँ 2.5 वोल्ट विल बी द आंसर, दैट इज ई सेल। इसका मतलब क्या है सर, नेगेटिव है, इसका मतलब ये है दैट फॉर दिस रिएक्शन टू अकर एट 500 डिग्री सेल्सियस द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नीडेड इज 2.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको इतना देना पड़ेगा, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड। जनरली तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज इट इज गिवन बाय द सेल, यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव द सेल हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, 2.5 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस नेगेटिव साइन इज डिनोटिंग दैट आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हम बता देंगे। अभी एक चीज यहाँ पे बता देते हैं आपके पास 3 कंडीशन है ना, देयर आर 3 कंडीशन, थ्री का हम 2 कंडीशन बता सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल एंड डेल्टा जी, इसके में 2 केसेस हो सकते हैं। अगर ई सेल जो है इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और दूसरा केस ई सेल इट इज लेस देन 0, ठीक है। इसके इन अदर वर्ड्स ई सेल इज पॉजिटिव और यहाँ पे ई सेल इज नेगेटिव। जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव एंड देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और जब ई सेल नेगेटिव होगा तब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। जब स्पॉन्टेनियस होगा देन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल वर्क, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड इस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डज नॉट वर्क। एंड इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से चेंज होकर क्या हो जाएगा, रादर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो पहले इस सवाल को लिखिए आराम से, बिल्कुल बहुत पहले का सवाल है, 2014 में सवाल आया था, उसके बाद इस तरह का सवाल देखा नहीं गया है। लास्ट 3 was 2014। आराम से जल्दी जल्दी कीजिए, आराम से कीजिए लेकिन जल्दी जल्दी भी कीजिए, ठीक है ना।
Raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Taha. So you can write further. आगे लिखिए, फिर आगे ई सेल एंड डेल्टा जी के बारे में जो है। तो क्या हो गया आपका पूरा? ताहा पूरा लिख लिया आपने? No. नो ना, ताहा व्हाट अबाउट यू? पूरा लिख लिया Yes, क्या? sir. लिखिए. अच्छा, ये वाला भी ना? Yes, sir. दिस पार्ट, ठीक है ठीक है। आई थिंक जो भी लिख रहा होगा इतना ही लिख रहा होगा ना। आई थिंक नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना? जो लोग लिख चुके हैं दे कैन राइट द हेडिंग, आराम से लिखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वेटिंग फॉर आमना, मरियम एंड ताहा। मरियम तो नहीं लिख रही, आमना एंड ताहा, ताहा का तो हो गया ना, हो गया सबका। आई थिंक चलिए ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में अब कुछ बातें हैं उसको लिखते रहिए, होपफुली आपको समझ में आती रहेंगी, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर नॉट वेरी न्यू, हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है। द सेल इन विच द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs, non-spontaneous redox reaction occurs due to which electrical energy is converted to केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। यानी कि आपके पास रिएक्शन एक है, वो रिएक्शन होता नहीं है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। द टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी आर गिविंग राइट नाउ इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को केमिकल एनर्जी कहा जा रहा है। देयर इज अ चेंज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक अकर होगी, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, वही केमिकल एनर्जी है, राइट। Another thing that you will see in the product is that the process of
decomposition of compounds into ions by passing of electric current in molten or aqueous state is called इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि आपके पास एक कंपाउंड होगा, उसको आयंस में चेंज करेंगे, एंड जब आयंस कैथोड या एनोड में जाएगा तो फिर वहां पे उसका फिर से वापस से क्या बनेगा, इट इज गोइंग टू गिव यू अ नॉट कंपाउंड, रादर इट इज गोइंग टू गिव यू एन एलिमेंट। तो कंपाउंड से एलिमेंट बनाने तक क्या भाई क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, चलिए देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आई एम राइटिंग वेरी स्लोली। ठीक है, समझाने वाली बातें उसको हम लिख रहे हैं, आराम से उसको सुनते रहिए and you will understand each and every point। ठीक है, सबसे पहली बात, on passing current on passing current एक सेकंड रुकिए, on passing current में पहले तो नहीं, इसको थोड़ा सा छोड़ दो। पहले क्या होगा, when the हाँ, when electrolyte when electrolytes are dissolved in water, or if they are in molten state, they split into ions they split into ions। इसके बाद क्या होता है, on passing current on passing current the ions are attracted towards oppositely charged electrodes। सही है, आपने पहले मान लीजिए आपने NaCl डाला पानी के अंदर, तो NaCl विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब आप करंट पास करेंगे तो Na पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, Cl नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? कृष्ण आमना मरियम सत्यानंता, Yes, sir. है ना? जब नेगेटिव चीज पॉजिटिव के पास पहुंचेगी और पॉजिटिव चीज नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचेगी तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी देखिए, एनायंस कहाँ जाएंगे, एनायंस रीच एनोड anions reach anode and get neutralized। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनायन जो है उसका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडाइज। क्या होगा उनका, ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ऑक्सीडाइज। और दूसरी चीज है कैटायंस रीच कैथोड एंड गेट वही न्यूट्रलाइज, दैट इज न्यूट्रलाइज, दैट इज रिड्यूस। इनसे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। नेगेटिव से अगर आप जीरो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव से जीरो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर आप पॉजिटिव से जीरो आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट, इट इज रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, दिस इज जस्ट सिंपल पॉइंट, मूवमेंट ऑफ cation and anion, cation and anion is called
It's called electrolytic conductance. It's called electrolytic conductance, and the change is known as primary change. The movement of cation and anion is called electrolytic conductance, and the change is known as the primary change. Next one, this is something that we already know. For electrolytic cell, जो EMF ऑफ सेल होता है, E cell it is equal to negative, तो डेल्टा G जो होता है that is equal to positive है, तभी तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. चलिए, raise your hand once you're done. I hope you were writing with me a few points at least. नहीं तो फिर just let me know, I can show you all the points. बिल्कुल जो एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट है ना उसको भी हमने लिखा दिया ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि हो क्या रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, है ना. वेरी सिंपल. यू पुट फॉर एग्जांपल सम इलेक्ट्रोलाइट सच एज NaCl. NaCl will get converted to Na plus and Cl negative. वो डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगे? Na plus and Cl negative. Once you pass current, then the positive cation is going to go towards the cathode, that is the positive terminal, और एनोड में जाएंगे, that is the negative terminal, है ना. तो इससे प्रॉपर्टी डाउन, एनोड जाएंगे, सॉरी एनायंस जाएंगे एनोड में जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होगा. जैसे यहाँ पे देखिएगा पोलैरिटी चेंज हो चुकी है ना. एनोड अब पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ पे भी एनोड में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और कैथोड में भी रिडक्शन ही हो रहा है, एज वाज द केस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसकी पोलैरिटी भी लिख लीजिए. इसमें जो होता है एनोड में आपके पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन. ठीक है, इसको याद रखिएगा. एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन. तो एनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज एनोड के पास आ रहा है, यानी कि एनोड का पोलैरिटी क्या होगा? इसकी पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव. और कैथोड क्या होते हैं? कैथोड में होता है रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन ऑफ कैटायन, दैट इज द पोलैरिटी, इट विल बी नेगेटिव. ठीक है ना. नेक्स्ट जो आपके पास करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना. तो हम तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग दो चीजें देखेंगे. एक देखेंगे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इस सेक्शन को हम लोग क्या प्रोडक्ट आपको मिलने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस से, क्वालिटेटिव वही हो गए, क्या मिलने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी, इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या देखना है हम लोग को? फैराडेज लॉ. बेसिकली हम लोग को फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ना है. हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फाउंड. एक चीज हम बता देते हैं, फैराडेज लॉ शायद आप लोगों ने अगर स्कूल वगैरह पढ़ा है तो फैराडेज लॉ इज द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ना. अगर आपको थोड़ा सा भी डर है फैराडेज लॉ का, सब खत्म हो जाएगा. ठीक है, डोंट हैव टू वरी अबाउट फैराडेज लॉ. इतना आसान है, इतना आसान, इतना आसान. मतलब इसमें सबसे जानते हैं क्या करना पड़ता है फैराडेज लॉ में? आप लॉ मत पढ़िए, आप लॉजिक पे जाइए, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज प्योर लॉजिक. हर चीज जो है ना लॉजिक से समझिए, अपने दिमाग से, खुद से. ठीक है, कोई फॉर्मूला, कोई लॉ, कोई मतलब लॉ क्या होता है भाई? मतलब दुनिया में जो चीज हो रही है कॉन्सिक्वेंशियल भी तो हो रही है कि ये हो रहा होगा उसकी वजह से ये हो रहा होगा, उसकी वजह से ये हो रहा होगा.
फैराडे बाबा कौन है भाई बताने वाले? हमारे पास खुद दिमाग है, हम खुद समझेंगे चीजों को। ठीक है, उनके वर्ड्स लिख जाने। सिर्फ आपको फैराडे लॉ किस वजह से पढ़ना है? फैराडे लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में पूछ लेता है कि फैराडे का लॉ होता क्या है, लेट्स इट। अदरवाइज सारी ही चीजें, मतलब इवन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या नहीं पढ़ाते, मार्कोनिकॉव रूल, सेडजर रूल, है ना, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, फादास रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, लेकिन ऑल मतलब रूल्स क्या है भाई? होंगी चीजें तो लॉजिकली ना। अब वो लॉजिक अगर मार्कोनिकॉव ने पहले दिया तो ऐसे रूल के हिसाब से क्यों पढ़ा, लॉजिक के हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी फैराडे लॉ को जो है हम लोग लॉजिकली समझेंगे, उसकी जो लॉ की स्टेटमेंट है वो तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं, वो हम बोलेंगे एनसीईआरटी से कॉपी कीजिए, पेज छुड़वा देंगे हम, आएगा तो उसको वैसे ही लिख देना। ठीक है, आएगा तो उसको वैसे ही लिख, खैर तो बात की बात है। अब हम लोग आते हैं जरा इससे पहले हम लोग देखते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो टॉपिक जारी का नंबर ए, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट्स गोइंग टू डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो उसी को पहले लिख सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग। इन सारी बातों पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है, अगर NaCl है तो फिर उसके हिसाब से बनेगा। अगर कैल्शियम क्लोराइड है देन द प्रोडक्ट इज गोइंग टू गेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है या NaCl, तो उससे फर्क हो जाएगा ना। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है आपके पास मोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब मोड का? मोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक्वस है या फिर मोल्टेन है। मतलब क्या है इस चीज का? अगर आपके पास पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है तो यू वी विल हैव टू कंसीडर वाटर आल्सो ना। वहां पे आपके पास एक केमिकल सब्सटेंस वाटर भी आ जाएगा। इफ NaCl इज एक्वस देन द species that is getting electrolyte is water. We cannot ignore water if we have in aqueous medium, but if we are using a molten medium, then molten NaCl में सिर्फ NaCl होगा, there will be no water. So we will have to also look at the mode of electrolyte. Third is the nature of electrode. Nature of electrode, जैसे कई इलेक्ट्रोड होते हैं वो इनर्ट होते हैं ना, वी हैव सीन प्लैटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। और उसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, टेक पार्ट इन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर का इलेक्ट्रोड हो जाए, जिंक इलेक्ट्रोड हो जाती है, पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, तो उनको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर एक्टिव है। एंड द लास्ट थिंग दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द formation of product is the concentration of solution, is the concentration of solution. ठीक है, raise your hand once you're done writing this. Raise your hand once you're done writing this. Waiting for Sufyan and Taha. Waiting for Sufyan.
कैन राइट दिस क्विकली। अब एक बस रिमार्क इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, दैट मीन्स यू हैव वन कैटायन एंड वन एनायन, देन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? कैटायन न्यूट्राइल होगा, एनायन न्यूट्राइल होगा, जो मिलेगा वही मिलेगा। कैटायन विल गेट reduced, anion will get oxidized, and whatever the reaction is doing, उस redox reaction में जो कुछ हो रहा होगा वही होगा बस। there is no other options available। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखिएगा, if solution is solution has only one cation and one anion, then formation of product can be easily predicted। कैन बी इजिली प्रेडिक्टेड। ठीक है, इसमें लिखिएगा। अब जब एक से ज्यादा कटायन या आयन हो जाएंगे तब फिर वहां पे दिक्कत होगी ना, तो फिर क्या करेंगे देखिए जरा सुनिएगा। इफ सोल्यूशन हैज मोर देन वन कैटायन और अनायन, देन द अनायन विथ अनायन का ऑक्सीडेशन होना है, तो जिस अगर दो अनायन है आपके पास तो उसमें से जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, दैट विल बी प्रेफर्ड एट एनोड विथ हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर जनरली एसआरपी दिया रहता है तो लोअर एसआरपी, हायर हाइट ऑफ रिजोल्यूशन। अच्छा, एक और चीज तो फैक्टर काम में आती है, दैट इज द साइज। ठीक है, अगर साइज छोटा होता है आराम से मूव करके चला जाएगा, लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो दिक्कत आती है। ठीक, देन हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्मॉल साइज। एंड स्मॉल साइज पहले, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही देखेंगे, साइज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ये भी काम में आता है। स्मॉल साइज गेट्स प्रिफर्ड एट एनोड, गेट्स प्रिफर्ड एट एनोड, एंड द कैटायन विथ एंड द कैटायन विथ हायर एसआरपी, हायर एसआरपी एंड स्मॉल साइज gets preferred at cathode। ठीक है, तो हम लोग को दोनों किस्म के मिलेंगे, हम लोग को मोल्टन वाले भी मिलेंगे और हम लोग को एक्वस वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मोल्टन वाला कर लेते हैं। आई थिंक एक्वस वाला एक हम लोग कम से कम स्केल वाला देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो बिट इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है, रेज योर हैंड वंस डन। और उसके बाद सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे दैट इज मोल्टन NaCl। इट्स बैक इन द मिनट।
Raise your hand once you're done writing. Waiting for Amna and Mariam Batur. Amna only because Mariam Batur is not writing. Just waiting for Amna. देखिए मोल्टेन NaCl में तो आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, NaCl ही है, एंड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दिस इनर्ट। तो यहाँ पे आपके पास कैसे करना है इसको देख लीजिए, इससे आप सीख जाइएगा, अगले वाला खुद से करना है क्योंकि आपको NaCl इट विल गेट डिसोसिएटेड टू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कैथोड में क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड में Na पॉजिटिव जाएगा, it will get electron and it will get reduced to sodium solid. At anode क्या होगा, at anode मतलब कोई और है ही नहीं ना, Cl negative ion is going to get reduced to chlorine and it will give you electron, है ना। तो अगर दो Cl कर ले तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। That's it. प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल, सोडियम सॉलिड एट व्हाट कैथोड and chlorine gas at anode। तो उसके एलिमेंटल स्टेट तक पहुंचा देना। सर सीएल क्यों नहीं लिखा आपने, सीएल भी होता ही नहीं है, सीएल तो ही ना होता दुनिया में, दुनिया में क्या होता है, क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में होता है। क्लोरीन कैसे मिलता है आपको, व्हाट इज इट्स एलिमेंटल स्टेट, इट इज क्लोरीन Cl2। ठीक है, चलिए अगला वाला जरा हम लिखते हैं खुद से और आपको कीजिए। सेकंड वन इज मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड with platinum electrode। You have to send this answer on my WhatsApp। All of you understood this ना, ये सुनो, आमना मरियम सुफियान एंड ताहा, Yes, sir. है ना। ये क्या, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड वाला करके हमको जूम चैट करिए, व्हाट्सएप करके ये प्लीज।
तो क्या नाम कहाँ भेज रहे हैं आप लोग? Yes, sir. आर यू सेंडिंग द आंसर फॉर सेकंड वन? मोल्टन सी एस इंटू का सेम चीज आपको करना है। तो आपको तो दिमाग Okay. लगाइएगा, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द कैल्शियम क्लोराइड, है ना, इनटू कैल्शियम पॉजिटिव एंड सीएल। ठीक है, उसका ये कीजिए जरा। हाँ, क्या सही है। ताहा, आई एम वेटिंग फॉर यू। ताहा। Yes, sir. ताहा, लुकिंग एट योर आंसर। Sir, sent it. सही है, वेरी गुड। हाँ, आई वाज जस्ट लुकिंग एट योर आंसर, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, सिंपली क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, calcium chloride is going to break into calcium 2 positive plus 2 Cl negative. So at anode में anion आएगा, that is 2 chloride ions are going to get oxidized to chlorine gas and it will give you 2 electrons. And at cathode, calcium 2 positive is going to eat the 2 electrons and give you calcium solid. So the product will be calcium solid at cathode and Cl2 gas at anode. Done, everyone? All of you done writing? आमना का इंतजार है बस, बाकी बाकी सब तो लिख ही लिया होगा होपफुली। आमना लिख लिया आपने? आमना, आमना, One आर यू minute. डन? अच्छा ठीक है, लिख लिया।
Done, sir. ठीक है, चलिए सेकंड के बाद थर्ड लिखिएगा। थर्ड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आपको रटना पड़ेगा यहाँ पे ना। देयर इज फ्यू थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड मेमोराइज। दैट इज aqueous NaCl solution with platinum electrode। सबसे पहली बात तो इस aqueous NaCl का एक और नाम होता है जिसको ब्राइन कहा जाता है। You may have heard this brine solution in class 10th standard, एक बार कहीं सुना होगा आपने ब्राइन के बारे में। ठीक है, what are the useful products that can be formed from brine। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखना है what are the species available in the solution। पहले देख लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना। और जब आप लिखने लगे तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा that you don't see the screen too much and write from the memory itself। So see how we are doing the whole thing। First of all, I'm going to write the species। As soon as aqueous NaCl is present, you will have Na positive, you will have Cl negative, and you're also going to have water। आपके पास पानी भी होगा। ऑब्वियसली पानी का H प्लस और OH नेगेटिव पे लिखा जा सकता है, बट वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर राइटिंग इट एज H2O। यू मे सी इन बुक्स एंड इवन आई थिंक एनसीईआरटी में भी इसको H प्लस और OH नेगेटिव लिख दिया, बट they are not present in considerable amount, right? 10 to the power minus 7 moles per liter, very little। So you are going to take consider H2O only। So what are the possible reactions at the। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप इसको ब्रेक कर देंगे ना कि H प्लस है और आपके पास OH नेगेटिव है, तो इसमें आपको प्रोडक्ट्स याद रखने में आसानी होती है। बट दैट्स द ओनली थिंग। जस्ट गिव मी पॉसिबल रिएक्शन कीजिएगा। पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड। पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली सोडियम पॉजिटिव कैन हीट इलेक्ट्रॉन and get converted to sodium solid। Now this reaction obviously बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है इस रिएक्शन को। दैट इज Na पॉजिटिव से Na जाना जो है, दैट इज रिडक्शन ऑफ सोडियम। इट रिक्वायर्स 2.71 वोल्ट, है ना। नेगेटिव साइन इज सेइंग दैट इट रिक्वायर्स दिस मच वोल्टेज। अगर हम पानी की बात करें तो ध्यान से देखिएगा जरा। H2O eats up electron, it eats up 2 electron and it gives you H2 gas। अब क्या देता है ये H2 गैस देता है। तो अच्छा, यानी कि जो H प्लस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है H2 में, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास OH नेगेटिव बचेगा। बट व्हेन यू आर गोइंग टू बैलेंस इट, इट इज गोइंग टू गिव यू 2H2O। 2H2O से आपके पास दो तो निकल जाएंगे आपके पास क्या, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी liberated and then you are going to get 2 moles of OH negative, 2 moles of OH negative। The E naught of this reaction, it is considerably low on the requirement side because it is only 0.83। it only requires 0.83 voltage, rather this requires minus 2.71। obviously बात है कि the second reaction is much more feasible, it requires much lesser energy, है ना। and also जब भी आप solution बना रहे हैं तो फिर solvent का amount ज्यादा रहेगा, तो पानी तो obviously ज्यादा है, पानी ऐसे भी क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है, in comparison to NaCl। obviously this reaction is going to get preferred। why? because the E naught value of the second reaction, जो reduction potential, it is much higher than that of the sodium। सोडियम को ज्यादा एनर्जी चाहिए लेकिन वाटर में कम एनर्जी में भी काम चल जाता है। नाउ देखिएगा नेक्स्ट, पॉसिबल रिएक्शन एट एनोड। व्हाट आर द पॉसिबल रिएक्शंस? पॉसिबल रिएक्शन एट एनोड। एनोड में जो पॉसिबल रिएक्शन है दैट इज क्लोरीन आयन गेटिंग कन्वर्टेड टू Cl2 giving you electron। if you balance it, it will give you 2 chlorine and there will be 2 electrons। the E naught of this particular reaction, it is equal to minus 1.36 volt। ठीक है। The other reaction that we are going to have is H2O। there will be 2 water molecules, it will be giving you O2 gas plus 4H positive and it will give you 4 electrons। the E naught of this particular reaction is equal to minus 1.23 volt। minus 1.23 volt। अब अगर आप देखिए यहाँ पे
then there is not much difference in what? There is not much difference in the electrode potential of water and chlorine. जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, the oxidation potential of chlorine and the oxidation potential, बहुत ज्यादा का फर्क यहाँ पे नहीं आ रहा. You can see that E naught of, by the way, this is E naught of this reaction है ना, इस reaction का reduction potential नहीं है, ये oxidation potential की वैल्यू लिख रहे हैं हम. E naught for this reaction, that is the oxidation reaction. The difference is not much, बहुत ज्यादा difference यहाँ पे नहीं है. बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ कहते हैं बात देखें, if I am going to look only at the oxidation potential, तो higher oxidation potential तो water का है, higher oxidation potential water का है. But being a neutral atom and also larger than chlorine, because water is going to have three atoms, chloride ion is going to have only one. क्या होता है यहाँ पे कि chloride ions they have charge also. एक अगली चीज ये है कि चार्ज भी है, तो movement of chloride ions is very easy in comparison to water. So chloride ions can easily move and they will reach the anode very quickly. और जो water का formation है that is kinetically slow होता है. ठीक है, एक चीज अभी आपको एक और चीज बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इवन इन द प्रीवियस केस में सोडियम भी बनता है, पानी मतलब हाइड्रोजन गैस भी बनता है, दोनों ही चीजें बनती हैं. बट जिस रेट से हाइड्रोजन गैस बन रहा होता है वो रेट बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम. दैट इज लाइक प्रीडोमिनेटली वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? H2O. बट इन दिस केस प्रीडोमिनेटली वी आर गोइंग टू गेट क्लोरीन बिकॉज वाटर का उतना फास्ट नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, दिस मे कम इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, द formation of O2 in anode is slow, as very few H2O की बात कर लें या फिर आप OH negative की बात कर लें, if you are considering H plus and OH negative, reaches the anode. This slowness leads to the need of greater potential than E naught. जो E naught की वैल्यू है ना फॉर दिस रिएक्शन H2O का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, सॉरी हाँ H2O का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी जो E naught है -1.23, बट बिकॉज ऑफ द स्लोनेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो असली द एक्चुअल E naught रिक्वायर्ड इज मच हायर. ठीक है, दिस स्लोनेस मींस द नीड ऑफ ग्रेटर पोटेंशियल देन E naught से भी ज्यादा पोटेंशियल उसको चाहिए रहता है. दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड, दिस extra potential required is called over voltage or over potential. Over voltage or over potential, and that is what happens. Chlorine is preferred at anode. Therefore, Cl negative को is welcomed at anode, is preferred at anode. Simple में अगर आपसे पूछे ना why is water or why is OH negative not preferred in anode in aqueous NaCl, आपको इस वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना है, दैट इज ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल की वजह से. ठीक है, अब यहीं से लिख दीजिए, तब भी काफी इतनी सारी चीजें आपको जरूरत नहीं है. वाटर रिक्वायर्स हायर पोटेंशियल देन E naught. दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज और इसी की वजह से होता है. इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, the product that we are going to get in this particular reaction is going to be H2 at cathode and chlorine gas at anode. Please write it down. Raise your hand once you're done.
Please raise your hand once you're done. सेकंड वाले में कौन प्रिफर्ड होगा? क्लोरीन विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, तो पहले वाले में जो रीजन था why water was preferred, it was because of the difference in the E naught. The second case, the difference in E naught is not very significant. That is why, because of over voltage or over potential, which is preferred chlorine. Okay, so we have done three. I think we have to do approximately 7 more. I mean, not 7 more. In total, we have to do 7 cells. I guess जहाँ तक हमको याद है 7 होगा या 8 होगा. We have to do 7 or 8 cells, and then we are going to look into the qualitative analysis of electrolysis. That is the Faraday's law of electrolysis in the next class. कुछ cells और रह गए हैं, उनको हम लोग कर लेंगे, and then we are going to move on to the easier portion. Faraday's law. Faraday's law में बहुत ही आसान. हो गया कि नहीं हुआ अभी तक भाई? सब लिख रहे हैं क्या अभी तक? So waiting for Amna and Taha.